Good evening, everyone. So we are here with a new math session of chapter number 13 and chapter number 14, which are the last two chapters of our class 10 maths. So today we are completing our math journey before the exam. Good evening, everyone. So we are here with a new math session of chapter number 13 and chapter number 14, which are the last two chapters of our class 10 maths. Yeah. So we are going to start first with our chapter number 13, statistics. We are going to conclude all the equation for mean, mode and median. We are also going to solve each example for the particular concept, and after that we start our last chapter, which is chapter number 14, probability. So let's start with chapter number 13, statistics. So first is mean of a group data. So we need to find mean. How we can find mean? So if we have a group of set, then we can find it by the equation, and the mean is given by x bar. Mean is also known as average of our data, right? So x bar is given by, it is a summation of I is equal to n fi xi divided by summation I is equal to 1 to n fi. So this equation is helpful to us for finding mean, right? Where x is our observation, f is frequency, right? We need to take the product of this frequency and observation, and we have to divide that by the total of our frequency. Okay, so this is the equation for finding mean. Let's take one small concept of class mark, because whenever we are solving the question upon the mean, then we have two types of question. In which the first one, we got one question in which there is no class. It means we are directly provided with the observation like x1, x2, x3, and we have frequency which is f1, f2, f3, right? So in this case we can directly use this equation to find out the mean. But what about when we are providing with class? For example, we have class of 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, likewise, and we have frequency 3 to 7. So in this case, if we want to find the mean, then first of all we need to convert this class into class mark. Now what is class mark? So class mark is given by upper limit plus lower limit divided by 2. So with the help of this equation we can find out class mark, and this class mark is denoted by xi
It means what is the class mark for 10, 20? So it's 10 plus 20 divided by 2. It means 30 divided by 2. It means it is 15. So we have xi as 15. Okay. So likewise we can find all the class mark for the given class. After finding the class mark, we have xi, we have frequency. So we can easily find out fi xi, product of fi xi, and with the help of fi xi and frequency we can find mean. Okay. So for mean we have two types of question that will be asked in your exam. Let's take one example. The question is that the marks obtained by 30 students of class 10 of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks are presented in the table. Find the mean of the marks obtained by the student. We have to find mean, which means x bar, right? Now we have marks obtained. So let's plot the table for this observation. So marks obtained, it can be represented by xi. It's 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92 and 95. We have frequency. We have frequency 1, 1, 3, 4, 3, 2, 4, 4, 1, 1, 2, 3, 1. Now, if we want to find the mean, then we have the equation which is fi xi divided for I is equal to 1 to n fi. So we have fi frequency over here. We need to find this product of fi xi. So let's find it out. Fi xi. So its 10 ones are 10, 20 ones are 20, 36 threes are, so 3 6 are 18, 3 3s are 9 plus 1 10, 108, then 44s are 160, 53s are 150, 56 2s are it's 112, 64s are it's 240, 74s are it's 280, 72 ones are 72, 80 ones are 80, 88 twos are 176, 92 threes are 276 and 95 ones are 95. Now we want the total of fi xi. So if we add all these product, so we will get sigma fi xi. So sigma fi xi is 1779. If we add all of these, we will get 1779, and sigma fi, which means we have to add all this. If we add, we will get 30. So place this value in our equation. So it's 1779 divided by 30. If we divide 1779 by 30, then you will get
59.3, which is the mean for our question. Next, now we have class, we have the observation in which we have class, and we want to find the mean for the given question. So whenever we are providing with class, first need that you have to do is you have to find class mark. You have to find class mark. So let's just plot a table. We have class. We have class over here. We have our frequency, which is Fi. We have to find class mark. Class marks can be given by Xi. So plot Xi over here. Then we have to find Fi(xi). So this column is for Fi(xi). Done. Now class are 10, 25, then 25 to 40, then 40 to 55, then 55 to 70, then 70 to 85, then 85 to 100. Okay. We have the frequency 2, 3, 7, 6, 6, 6. Now, what is Xi? Xi is our class mark, which is given by the upper limit plus lower limit divided by 2. So upper limit is 10, lower limit is 25. 10 plus 25, it is 35, and 35 divided by 2, which is 17.5. Next, 25 plus 40, so it is 65, and 65 divided by 2, so we got 34.5, 32.5. So for this we have 32.5. Next, 40 plus 55, we got 95 divided by 2, we got 47.5. Next, 55 plus 17, so we got 125 divided by 2, it's 62.5. Next, 70 plus 85, so it's 155 divided by 2, it's 77.5. Next, 85 plus 100, so it's 185 divided by 2, it's 92.5. So here we got Xi. We find Xi by the class mark upper limit plus lower limit divided by 2. Next, we need to find the product of Fi(xi). So 17.5 into 2, it will become 35. Next, 32.5 into 3, so 3 5s are 15, 3 2s are 6 plus 1 7, and 3 3s are 9. We have 97.5. Next, 7 5s are, it will be 35, 7 7s are 49, 49 plus 3, okay. Pratibha Waghela, which concept that you don't understand, or which part do you want to repeat me again? Just type in the comment section so that we can cover it again. If you don't get any point, then you can just tell us in your comment.
and we will repeat it again. So here we are just multiplying fi with xi, right? So 7 5s are 35, 7 7s are 49, 49 plus 3 is 52, 7 4s are 28, 28 plus 5 33, so it will be 332.5. Now take the product of these two, 6 5s are 30, 6 2s are 12, 12 plus 3 15, 6 6 are 36 plus 1 37, we got 375. Next just take the product of this one, 6 5s are 30, 6 7s are 42, 42 plus 3 45, 6 7s are 42, 42 plus 4 46, so it's 465. Next 92.5 into 6, 6 5s are, it will be 30, 6 2s are 12 plus 3 15, 6 9s are 54 plus 1 55, so it's 555. So in this way we complete our table. Now what next that we need to find? We want the mean. So the equation of mean is, it is a summation of fi xi divided by summation of fi, right? So what is the summation of fi xi? So if you add all these, you will get summation of fi xi as 1860, okay? And if you add this fi, then you will get 30. Now just place the value of fi xi and fi into our equation. So it will be 1860 divided by 30. So we will get 0 0 will be cancelled out, 3 6 are 18 and 3 2s are 6. So we get our answer, which means mean is equal to 62. In this way we can easily find out the mean for the given value. Next, now we have another method to find out mean, which is called assume mean method. So in assume mean method, we have one equation for this, which is x bar. Mean is given by x bar. So x bar is equal to a plus sigma fi xi, so sigma fi di upon fi, where a is equal to assume xi and di is deviation, di is deviation which is given by xi minus a. So this is the equation that we are going to use. This is the equation that we are going to use to solve the mean by the assume mean method. Okay, the equation is x bar is equal to a plus sigma fi di divided by fy, where a is, we can assume a from our xi, and di which is deviation and which is given by xi minus a. Just remember this equation right now. In the very next slide we are going to solve a sum on this concept. So you will get to know that how we can solve it. So we have to solve this by the assume mean method. Okay, we have to solve this by assume mean
method. Done? Okay. So first we have to plot a table. So just write down the class over here. Next we have to write frequency. Next we have to write xi. Xi is our class mark. After that we have to find di. So di, which is given by xi minus a, and at last we have to find fi di. Done? Okay. So the class is 10, 25. Second class is 25, 40. Third class is 40, 55. Then 55, 70. Then 70, 85. Then 85, 100. Okay. Fi is 2, 3, 7, 6, 6 and 6. What is xi? What is xi? So xi that we have already find for this interval in the previous question, which is 17.5, 32.5, 47.5. Right? And another xis are so these xi which are already we found in the previous question. So let's assume a over here. So we can take any of the value from xi as a. As we have discussed in this slide, that a is assumed from xi. So xi is, let's consider this as xa. So di is given by xi minus a. So it's 17.5 minus 47.5. If we subtract it, we will get minus 30 over here. Next, if we subtract 32.5 and 47.5, then we will get minus 15 over here. We will get 0. If we subtract 62.5 and 47.5, it will be 15. Here, if we subtract 77.5 minus 47.5, it's 30. And if we subtract 92.5 from 47.5, then we will get 45. So we get the value of di over here, right? Now, next we need to find the product of fi di. So what is the product of fi di? We have fi2, we have dy minus 3. The product of fi di will become minus 60. The product of fi di here, it will become minus 45. It will become 0 over here. It's 15 6 90 over here. Here 30 into 6, it's 180, and 6 into 45, so 270 over here. So here we have completed our table. Now we have to use the equation of mean for the assume mean method. So mean is given by a plus sigma fi di divided by sigma fi. So a that we have assumed, which is 47.5, plus sigma fi di. So here sigma fi di is
if we just add all these, we will get 435. So we have 435 over here, and if we add Fi, then we will get 30. So just write sigma Fi as 30. Now 435 divided by 30, then it will give you, let's divide it. So it's 417.5 plus 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 5s are 15. It will give you 14.5. If you add both these, then you will get 62. So the mean is equal to 62. Okay. Next, we have step deviation method. We have step deviation method. So in step deviation method, we have to use the equation which is x bar is equal to a plus h into sigma Fi ui divided by, in step deviation method, Fi ui divided by sigma Fi, where a that we have already discussed in the previous concept. What is h? H is class size, right? Now how we will get the value of ui? So ui is given by xi minus a upon h, right? So this is the equation to find the mean by step deviation method. Let's take one example of it. So we have this observation, and we want to find the mean. We want to find mean by the step deviation method. So write down class over here. Second, write down frequency. Third, we need to find the class mark. Fourth, what we need to take over here? We need to find di. So write di. Now if we get di, then we need to find ui, which is given by di minus a upon h, and at the last we want to find Fi ui. Okay, let's just complete this table. The class is 10 25. The second class is 25 40. The third class is 40 55. Next is 55 70. Then 70 85 and 85 100. Now frequency is given by 2, 3, 7, 6, 6 and 6. Xi that we have already found in the previous one, because the observation are same. So it's 17.5, 32.5. Okay. So if you don't know how to find xi, then it will be upper limit plus lower limit divided by 2. Now what is di? So for di we need to take a. So let's take this 47.5 as a. Di is equal to xi minus a.
So if we subtract 47.5 from 17.5, then we will get minus 30. If we subtract 47.5 from 32.5, then we'll have minus 15. This 0. Here we got 50, 30 and 45. Next, we need to find ui. How we can find ui? So we have to find ui by the xi minus a upon h. Now here what is h? So h is our class size. How we can find the class size? So it's 25 minus 10, so it will be 15. So we have to divide this di by 15. So here we will get minus 2, minus 1, 0, 1, 2 and 3. Now we have to find the product of fi ui. So fi is 2, ui is minus 2, then it will be minus 4. 3 multiplied by minus 1, minus 3. 7 multiplied by 0, it's 0. 6 multiplied by 1, it will be 6. 6 multiplied by 2, it will be 12. And 6 multiplied by 3, it will be 18. So in this way we can find fi ui. Next, we have to find the addition of fi ui. Why? Because mean is given by a plus h in bracket addition of fi ui divided by addition of fi, right? So for addition of fi ui, we need to add all of this. If we add them, then we will get 29, and if we add this fi, then we will get 30. Just place the value in our this equation. So a is 47.5 plus h is 15. Here fi ui is 29 and fi is 30. So it's 15 2s are 30. If we divide 29 by 2, then it will be 14.5. So 47.5 plus 14.5, if we add both of the number, we will get 62 as the mean. So with the help of this step deviation method, we can find mean in the following way. Next, how we can find the mode of group data. So for finding mode, we have the equation mode is equal to L plus F1 minus FO divided by 2 F1 minus FO minus F2 into H. So this is the equation to find mode. Next, let's just classify this each and every term. So what is L? So L is the lower limit of our model class. L is the lower limit of model class. What is F1? So F1 is the frequency of the model class. F1 is the frequency of the model class. What is F0? F0 is the frequency of, or it is denoted by the previous class of model class, and the frequency of that class is denoted by FO. What is F2? So F2 is the frequency of the successive class of model class, and H is our class size. Let's, with the help of this equation, we find one of the mode. So let's plot the table. Here we have class,
we have frequency. Let's find out the class mark. Okay, so we have class which is 1 3 3 5 5 7 7 9 and 9 11. We have frequency 7 8 2 2 and 1. Now what is xi? So is there any need to find xi? No, because we need to find the mode, and mode is directly found by the equation mode is equal to L plus F1 minus Fo divided by 2F1 minus Fo minus F2 into H, right? Now what is L? So L is the lower limit of the model class. Model class means the class with the highest frequency. So here highest frequency is 8 and the lower limit of that class is 3. So we can consider L is equal to 3. Now what is F1? So F1 is the frequency of the model class. So it is 8. What is F0? So it is the previous frequency of the previously class of the model class. So it will be 7. What is F2? Here F2 is given by 2, so F2 is equal to 2. Now what is H? So it is the size of the class. Size of the class is given by difference of upper limit minus lower limit. So 3 minus 1, it is 2. Now let's find mode. So mode is equal to L, which is 3 plus F1 8 minus Fo 7 divided by 2F1. It means 2 8s are 16 minus Fo 7 minus F2 minus 2 into H, which is 2. So let's simplify this. 3 plus 8 minus 7 1, 16 minus 2 14, 14 minus 7 7 into 2. So it's 3 plus 2 upon 7. It's 3 plus 2 upon 7. So it is 3 plus, if we divide 2 upon 7, then it will be 0.286. So my mode will be 3.286. So this is the mode of the given question. Next, let's take the next concept, which is median of group data. Median of group data. So median is found by the equation median is equal to L plus n upon 2 minus Cf upon F into H. So this is the equation to find out the median, where L is the lower limit of the model class, n is the total number of our frequency, where Cf is the cumulative frequency and H is our class size. Let's solve this question. Find the median height. We have a survey regarding the height of 51 girls of class 10 of school was conducted and the following data was obtained.
So let's plot graph for it. So here we have the statement which is less than 140, less than 145, less than 150, less than 155, less than 160 and less than 165. So let's plot a table for it. Here we have class. Second, we need to write the frequency, right? And what is the equation of median? So median is given by L plus n upon 2 minus Cf upon F into H. So here we need to find the Cf, cumulative frequency. Okay. Here there is no class given, but we have less than 140. So let's form one class which is less than 140. Okay. So less than 140 we have 4 girls. So write the frequency 4 over here. Now we are forming one class which is in between 140 to 145. Now we are taking a class of 140 to 145. So less than 145 is total 11, but from this 11, 4R is already considered in our class of less than 140. So we need to subtract 4. We need to subtract 4 from 11. So if we subtract 4 from 11, then we will get 7 over here. Now the next class is 145, 150. Now for the less than 145, less than 150 we have total 29 girls, but from this total 29 girls, 11 girls are already considered in the less than 145. So we need to subtract 11 from 29, then it will be 18. The next class is 150 and 155. The frequency of it is 40, but from this 40, 29 is already considered in 150. So we need to subtract 29 from 14, so it will be 11. The next class is 155, 160. So total number of girls is 46, from which 40 are already considered in our this class. So the remaining are 6 girls. Next is 160 and 165. The total number of girls is 51, and from this 51, 46 are considered in 160, then the 5 will be remained. Now how we can find Cf? So first write down the frequency which is 4. Now add this frequency, second frequency, 7 into 4. So 7 plus 4, it will be 11. Now add this 18 into 11, then it will be 29. Add this 11 into 29, it will be 40. Add 6 into 40, it will be 46. And add 5 into 46, it will be 51. So this is the Cf, and we can also consider this as n. Now just let's place the value into our equation, where L is, what is the highest frequency? Highest frequency is 18. So we can consider 150 as L. So L is equal to 145. What is N? So N is 51. What is Cf? So Cf that we are going to consider over is 11, because Cf is considered by, we have the our frequency 18. So we need to consider the previous Cf of our data. So it will be 11. What is frequency? Frequency is 18. And what is height? Height is our class size, and class size is 5. Now let's place this into our equation. L is equal to 145. N upon 2,
51 upon 2 minus CF means 11 divided by F, which is 18, into H, which is 5. So 145 here, what we can do, take the LCM. So it's 51 minus 22 upon 36 into 5. So it will be 145 into 51 minus 22. So if we subtract 22 from 15, then we will get 28 upon 36 into 5, and we have plus over here. So 145 plus 145 plus, if we just simplify the this part of our equation, then we will get 4.03 as answer. So our final answer will be 149.03. So in this way we can easily find out the value of median. Okay, let's go to the next one. This is the sum which maybe come in your exam, where we have some unknown value of frequency and we need to find it. The one of the student whose name is Pradeepa Vagela, that she is saying that sir frequency wale sum nahi aate, wo sikhao. So these are the sum in which we have to find the unknown frequency, which are x and y. Okay, so let's solve it. The question is that the median of the following data is 525. So we have the value of median, which is 525. We need to find the value of x and y. So we have to find x, which is question mark, and y is equal to question mark, that we need to find. The total frequency is 100. We have provided total frequency, which is n is equal to 100. Okay, let's start solving this. So we have class interval. Let's plot a table for it. So here we can write class. Next we can write frequency, and after that we have to write CF, cumulative frequency. The class are 0, 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800, 800 to 900, and 900 to 1000. So these are the class that we have. Okay. Now, what is the frequency? The frequency are 2, 5, x, 12, 17, 20, y, 9, 7, 4. Okay. So here let's first find out the cumulative frequency. So let's find out the cumulative frequency.
So the cumulative frequency will be the 2. Let's add 5 into 2, it will be 7. Let's add x into 7, it will be 7 plus x. Let's add 12 into 7, then it will be 19 plus x. Let's add 17 into 19, then it will be 36 plus x. Next is 20. Let's add 20 to 36, then it will be 56 plus x. Now next is y, so 56 plus x plus y. Next is 9, it will be 65 plus x plus y. Next add 7, then it will be 72 plus x plus y. Add 4, then it will be 76 plus x plus y. So in this way we have to plot this table. ओके, चलो हम फिर से एक बार देख लेते हैं हाउ टू प्लॉट दिस टेबल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, जो भी हमें क्लास इंटरवल दी है वो क्लास इंटरवल हमें यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में लिख देना है. सेकेंड कॉलम में हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, जो हमारे पास ऑलरेडी है क्वेश्चन के अंदर. सो सेकेंड कॉलम में हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी. नाउ व्हाट इज़ द इन थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम में हम क्या करेंगे, तो बेटा हमारे पास है मीडियन का इक्वेशन. मीडियन का इक्वेशन क्या है, सो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H. सो हमारे पास L इट मीन्स जो हमारा सबसे लोअर लिमिट है हमारे क्लास का, वो हम लेंगे L. N जो हमारे पास ऑलरेडी है 100. CF, तो CF के लिए हमने ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की है, जहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज़ 2, तो हमने पहले 2 लिख दिया. उसके बाद जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसको इसके अंदर ऐड कर देना है और सेकंड में कॉलम में लिख देना है. सो यहाँ पे हमने 5 प्लस 2 किया, 7 आ गया. यहाँ पे x है तो हमने 7 के अंदर x ऐड किया तो वो 7 प्लस x आ गया. उसके बाद 12 है, 12 प्लस 7 किया तो 19 प्लस x आ गया. 17 है, 17 प्लस 19 किया 36 प्लस x आ गया. नेक्स्ट 20 है, 20 प्लस 36 किया 56 प्लस x आ गया. नेक्स्ट इज y, सो 56 प्लस x है, उसके अंदर y हमने ऐड किया तो 56 प्लस x प्लस y आ गया. अभी 56 में 9 ऐड किया सो 65 प्लस x प्लस y आ गया. 65 में 7 ऐड किया सो 72 प्लस x प्लस y आ गया. एंड 72 में 4 ऐड किया तो हमारे पास 76 प्लस x प्लस y आ गया. सो इस तरीके से हमने हमारा जो टेबल है वो कंप्लीट कर दिया है. नाउ हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू है जो है 100. तो यहाँ पे जो हमारे पास 76 प्लस x प्लस y है, विद द हेल्प ऑफ दिस बोर्ड हमें एक इक्वेशन मिलेगा विच विल बी 76 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 100. नाउ ट्रांसपोज दिस 76 टू द राइट साइड, तो क्या हो जाएगा, x प्लस y is equal to 100 minus 76. Therefore x plus y is equal to 24. तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गया. चलो now what we can do, just place the value in this median's equation. So हमारे पास मीडियन की वैल्यू ऑलरेडी है 525. So it's 525 is equal to what is L. So हमारे पास सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये रही 20. सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो लोअर लिमिट है उसको हम L कंसीडर करेंगे. सो यहाँ पे L हो जाएगा 500 प्लस नेक्स्ट क्या है n अपॉन 2. तो n हमारे पास है 100. अगर मैं 100 को 2 से डिवाइड करूँगा तो वो हो जाएगा 50. सो इट विल बी 50 माइनस, अभी हमें CF की वैल्यू लेनी है तो CF की वैल्यू हम क्या लेंगे. सो हमारे पास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर के इंटरवल में जो CF है हम उसको कंसीडर करेंगे, तो वो हो जाएगा 36 माइनस x डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, तो जो हमारी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 20 और h मतलब क्या है, हमारा क्लास साइज. तो क्लास साइज है हमारा 100 का, तो यहाँ पे कर दो मल्टीप्लाई बाय
100. Okay, next हम लोग 500 को लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर रहे हैं, सो वो हो जाएगा 525 माइनस 500 इज इक्वल टू 50 माइनस 36, तो हो जाएगा 14 माइनस एक्स, यहाँ पे 20 फाइजा 100, सो यहाँ पे बचेगा 5. नाउ 525 माइनस 500, तो वो हो जाएगा 25. जस्ट डिस्ट्रीब्यूट दिस, सो 14 फाइजा 70 minus 5x, transpose this minus 5x to the left side, then it will become 5x is equal to 70 minus 25. So here 5x is equal to 70 minus 25. So 70 minus 25 will become 45, right? Therefore x is equal to 45 upon 5. So 5 9s are 45, therefore x is equal to 9. So we got first the unknown frequency, which is 9. Second, we want to find the value of y. So for that we have this equation, x plus y is equal to 24. Place the value of x, so 9 plus y is equal to 24. Therefore y is equal to 24 minus 9. Therefore y is equal to, we have 15. So in this way we can find the unknown frequency in the given question. In your examination, here we have provided with median. They can give you mode or mean, and there is one unknown frequency. So in the same way you can find that. So we have conduct all the topics of chapter number 13, which is mean, mode and median. सर थोड़ा वापस समझाओ, कौन सा पार्ट, which portion that I have to repeat it again? Okay, next chapter number 14, which is probability, the easiest chapter in class 10. There are some topics, some points that we need to remember. The first is that the theoretical probability of event E, written as P of E, and is defined as frequency. Okay. यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमें मीडियन की वैल्यू दी गई है. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मीडियन? सो यहाँ पे मीडियन की वैल्यू है 525, वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दी है. हमारे पास फ्रीक्वेंसी है जिसके अंदर x एंड y अननोन वैल्यू है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. और मुझे क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया n इज इक्वल टू 100. अभी मुझे क्या करना है? सो पहले तो आप जो आपको दिया गया है मीडियन, उसका इक्वेशन यहाँ पे मेंशन कर दो, ताकि आपको पता चले कि आपको कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट? सो हमारे पास है मीडियन का फॉर्मूला L प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच. अभी हम क्या करेंगे, हम टेबल प्लॉट करेंगे हमारे ऑब्जर्वेशन को लेकर. सो फर्स्ट हमारे पास क्लास इंटरवल है, सो क्लास इंटरवल यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, सेम जैसा मुझे क्वेश्चन में है वैसा ही है. फ्रीक्वेंसी जैसा मुझे क्वेश्चन में दिया गया है, सेम वैल्यू मैंने यहाँ पे जस्ट पुट की है उसके इंटरवल के सामने. हमारे पास यहाँ पे एक्सटर्नली फाइंड आउट क्या करने को है, सी एफ कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले आप जो फ्रीक्वेंसी दी गई है 2 उसको लिख दो. अभी सेकेंड सी एफ आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो आपके पास जो सेकेंड फ्रीक्वेंसी है 5, उसको
फर्स्ट वाले CF के अंदर ऐड करना है और उसका जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है. सो 5 + 2 इट विल बिकम 7. नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इज x. 7 के अंदर x को ऐड कर दो तो वो 7 + x हो जाएगा. नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इज 12, तो 7 + x में 12 ऐड कर दो तो वो 19 + x हो जाएगा. सेम तरीके से आपको एंड तक उसको ऐड करते जाना है. लास्ट में हमारे पास एक इक्वेशन बनेगा, एक टर्म आएगी 76 + x + y. अभी ये जो है वो हमारा टोटल नंबर है. सो हमारे पास तो टोटल नंबर की वैल्यू है 100, तो मैं 76 + x + y को 100 के साथ इक्विवेलेंट कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे एक इक्वेशन मिल जाएगा x + y = 24. अभी हमें क्या करना है कि हमारे पास जो मीडियन का फॉर्मूला है वो मीडियम के फॉर्मूला के अंदर जो जो वैल्यू हमारे पास है उसको प्लेस कर देनी है. तो यहाँ पे मीडियन हमारे पास ऑलरेडी है 525, मैंने 525 रख दिया मीडियन की प्लेस पे. इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, L है. L की वैल्यू क्या होती है, तो हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसकी जो लोअर लिमिट है ठीक है. ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज प्रोबेबिलिटी. इन प्रोबेबिलिटी हमें कुछ स्टेटमेंट को याद रखना है जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं. द थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E रिटन एज P of E एंड इट इज डिफाइंड एज, हम किसी भी प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, सो इट विल बी डिफाइंड एज P of E is equal to number of outcome of favorable to E. मतलब कि हमारे पास जो भी इवेंट है उसके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, और डिनोमिनेटर में क्या है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके टोटल आउटकम्स कितने हैं. जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक कॉइन है, मैं कॉइन को 1 टाइम फ्लिप कर रहा हूँ. जब मैं कॉइन को 1 टाइम फ्लिप करूँगा तब मेरे पास टोटल 2 आउटकम आ सकते हैं. एक तो या तो हेड हो सकता है या वो टेल हो सकता है, राइट. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए, एक हेड और एक टेल. तो यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, तो वहाँ पे मेरा आ जाएगा 2. अभी मैं यहाँ पे इवेंट कौन सी ले रहा हूँ, तो मैं इवेंट ले रहा हूँ कि जब मैं कॉइन को फ्लिप करूँगा उस टाइम पे अगर टेल आता है, सो मेरी इवेंट हो जाएगी कि टेल आना. तो टेल कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है. तो मेरे नंबर ऑफ आउटकम ऑफ फेवरेबल टू ई कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएगा. तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2. ठीक है. नेक्स्ट, the sum of probability of all the elementary event of an experiment is 1. अगर हमारे पास 2 elementary event है तो उसका जो probability का एडिशन है वो 1 आएगा. कैसे, यही एग्जाम्पल में देख लो. यहाँ पे हमने probability फाइंड की है हेड आने के, टेल आने के लिए, राइट. हमने यहाँ पे टेल आने के लिए probability फाइंड की है. अगर मैं हेड के लिए probability फाइंड करूँ तो यहाँ पे हेड भी 1 टाइम आ सकता है और टोटल मेरे रिजल्ट कितने होंगे, 2. तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1/2. अगर मैं ये दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दूँ 1/2 + 1/2 तो वो क्या हो जाएगा, 1. तो वही तो ये स्टेटमेंट के अंदर बोल रहे हैं कि द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1. तो यहाँ पे ये जो 2 इवेंट है, हेड आना और टेल आना, वो दोनों कैसे इवेंट है, एलिमेंट्री इवेंट है. कैसे पता चला, क्योंकि उनका एडिशन कितना हो रहा है, 1 हो रहा है. नेक्स्ट, इफ वी डिनोट इवेंट नॉट E बाय P of E bar, देन P of E + P of E bar इज इक्वल टू 1. अभी ये E बार क्या है या नॉट E क्या है समझ लो कि कॉइन के अंदर जो हेड आ रहा है वो मेरी एक इवेंट है, P of E इज इक्वल टू जो हेड आ रहा है वो मेरी इवेंट है. तो P
P ऑफ E बार क्या हो जाएगा, मतलब कि हेड नहीं आना, हेड नहीं आना। तो अगर मुझे हेड नहीं आना है, ऐसी मैं प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करता हूँ, तो उसको मैं डिनोट करूँगा P ऑफ E बार से, ठीक है। अगर वो हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा, राइट। सो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E ये दोनों को ऐड करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, वो दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरा एडिशन कितना आएगा, 1। जैसे कि यहाँ पे है मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ E 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इज़ 1/2। अगर 1/2 और 1/2 को ऐड करूँगा तो 1 आ जाएगा। इट मीन्स कि अगर कोई मेरी इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी और अगर इवेंट नहीं हो रही है उसकी प्रोबेबिलिटी, दोनों को अगर ऐड करूँगा तो उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विच इम्पॉसिबल टू अकर इज 0 एंड सच इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। अगर मेरे पास कोई एक इवेंट है जो पॉसिबल ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि जब आप अपनी बोर्ड की एग्ज़ाम ख़त्म कर दोगे, उसके बाद घर पे आके आप फिर से सोचोगे कि नहीं मैं फिर से 10th की बोर्ड की एग्ज़ाम दूंगा, मेरे मार्क्स कम आ गए लेकिन मुझे फिर से एग्ज़ाम दे के ज़्यादा मार्क्स लाने, तो क्या वो पॉसिबल है? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप एक ही बार बोर्ड की एग्ज़ाम दे सकते हो। इफ़ यू आर गेट फेल देन यू हैव टू डू इट अगेन। अगर आप फेल होते हो तो आप फिर से उसको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। लेकिन अगर कम मार्क्स आते हैं तो आप फिर से एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, राइट। सो वो इवेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसी इवेंट के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो जाती है और ऐसी प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर टू अकर इज 1। चलो समझ लेते हैं, CBSE के स्टूडेंट की मैथ्स की एग्जाम अभी बाकी है, राइट। ऑन मंडे दे हैव द मैथ्स एग्जाम। सो जितने भी बच्चे हैं उनके सबके 95 मार्क्स आ रहे हैं, जो फिक्स है। सबके 95 आएंगे ही, सबने मेहनत की है, सबके मार्क्स आएंगे। तो अगर ये 95 मार्क्स आ ही रहे हैं, 95 कंपलसरी आ रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे श्योर इवेंट। हम बोलते हैं कि मॉर्निंग के अंदर सन राइज करता है, कंपलसरी होगा, श्योर इवेंट है, ठीक है। ड्यूरिंग द नाइट जो स्टार्स है वो हमें दिखते हैं, दिखने ही वाला है, राइट, एक श्योर इवेंट है। तो जितनी भी श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, जितने भी इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन किए प्रोबेबिलिटी के लिए, विच आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन। हमारे पास एक क्वेश्चन है दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। हमारे पास एक कॉइन है, कॉइन को हमने एक बार टॉस किया है। जब हम कॉइन को टॉस करेंगे 1 टाइम, उस टाइम पे हमारे पास 2 रिजल्ट निकलेंगे, या तो कॉइन के ऊपर हेड आएगा या तो कॉइन के ऊपर टेल आएगा। तो हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। हेड आए उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हमारे लिए इवेंट क्या हो गई, हमारे लिए इवेंट हो गई है हेड आना। सो इवेंट इज गेटिंग हेड, ठीक है। चलो अभी प्रोबेबिलिटी हम कैसे लिखते हैं? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज गिवन बाय न्यूमरेटर के अंदर जितनी भी फेवरेबल रिजल्ट्स है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हेड आना, हेड यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो हमारा फेवरेबल रिजल्ट कितना हो गया 1। और डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं, जितने भी टोटल रिजल्ट आएंगे। तो यहाँ पे टोटल रिजल्ट कितने आ सकते हैं, 2 रिजल्ट आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो टोटल रिजल्ट को हम नीचे लिखेंगे। इट मीन्स हमारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2, ठीक है। नेक्स्ट, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है टेल के लिए। तो हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल? सो लेट्स टेक, वो हमारी एक इवेंट n है, ठीक है। अभी जब हम कॉइन को टॉस करेंगे और उस टाइम पे टेल आएगा, तो ऐसे हमारे पास कितने रिजल्ट है, सिर्फ एक ही रिजल्ट है, ये रहा।
इट मीन्स फेवरेबल रिजल्ट कितने हो गए 1, और टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट 2 है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 आ गया, तो हमारी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 1/2 फॉर गेटिंग टेल एंड 1/2 फॉर गेटिंग हेड. नेक्स्ट, a die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either time and 5 will come up at least once? अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक डाई है, हमारे पास एक डाई है और उस डाई को हम थ्रो कर रहे हैं. तो पहले तो हम जितने भी पॉसिबल सोल्यूशन है वो पॉसिबल सोल्यूशन को लिख देते हैं. सो जस्ट राइट डाउन all the possible solution. तो possible solution क्या होंगे, 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 5 एंड 1 6. ये तो 1 के लिए हुआ. ऐसा ही हम 2 के लिए लिखेंगे, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6. वैसे ही हम 3 के लिए लिखेंगे, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6. वैसे ही हम 4 के लिए लिखेंगे, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6. वैसे ही 5 के लिए 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6. सेम 6 के लिए 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6. These are the possible solution जब हम दो डाई को एक साथ थ्रो करेंगे. ठीक है, अभी हमारे पास पहला क्वेश्चन है 5 will not come up either time, मतलब कि 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए, ऐसी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए. ऐसे कितने रिजल्ट है, तो देखो यहाँ पे है 1 2 3 4, यहाँ पे आ रहा है 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. तो ऐसे टोटल कितने हैं, 25. 5 will not come either time. So ऐसे टोटल रिजल्ट कितना है, 25. So अगर हम फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें तो फेवरेबल रिजल्ट है हमारे 25 और टोटल रिजल्ट है मेरे पास 36. तो ये हो गई मेरी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट क्वेश्चन की. ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं. 5 will come up at least once. 5 एक बार तो आना ही चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. तो देखो यहाँ पे एक बार आना चाहिए, मतलब ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो यहाँ पे टोटल कितने रिजल्ट मिले हमें, 11. आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 5 5 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे क्या बोला है, एटलीस्ट 1, मतलब एक बार तो आना ही चाहिए, एक से ज़्यादा बार आएगा फिर भी चलेगा. तो ऐसे टोटल हमारे पास फेवरेबल रिजल्ट आ गए हैं 11. तो 11 न्यूमरेटर में आएगा और टोटल हमारे पास हो गया ऑब्जर्वेशन 36. तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई हमारे सेकंड क्वेश्चन की. ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो हमारे पास है दैट सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट अ रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन अ फिगर. मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ. हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 3 मीटर और जिसकी ब्रेड्थ है 2 मीटर. हमारे पास सेंटर में एक सर्कल है जिसका डायामीटर है 1 मीटर.
क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि हम एक डाई को रैंडमली थ्रो कर रहे हैं इस स्ट्रक्चर के ऊपर, और हमारा जो डाई है वो ये सर्कल के अंदर ही गिरेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सर्कल के अंदर गिरेगा मतलब कि जो फेवरेबल रिजल्ट है वो हमारा सर्कल हो गया। अभी उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एक ही ऑप्शन है, एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, और हमारा टोटल रिजल्ट मतलब कि टोटल रिजल्ट क्या हो गया, टोटल रिजल्ट हो गया हमारा ये पूरा रेक्टेंगल। तो वो रेक्टेंगल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट। चलो, सो हम पहले यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। सो एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर, पाई एज इट इज रहने दो, r means we have the diameter d is equal to 1, so r will become 1/2, so यहाँ पे हो जाएगा 1/2 होल स्क्वायर, so ये पाई अपॉन 4 हो गया मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल। अभी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इट इज गिवन बाय L इंटू बी। लेंथ है हमारे पास 3, ब्रेथ है 2, 6 मीटर स्क्वायर। So now we have the value of area of circle and area of rectangle. So what is the probability? Probability P of E is given by the favorable result. Favorable result क्या है, हमारा सर्कल का एरिया, तो वो हो जाएगा पाई अपॉन 4 इन न्यूमेरेटर। टोटल रिजल्ट क्या है हमारे पास 6, सो इट्स पाई अपॉन 4 इंटू 6, इट इज़ 5/24 मीटर स्क्वायर। ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी गिवन क्वेश्चन की। ठीक है, सो टुडे वी हैव covered chapter number 13 and chapter number 14, which is statistics and probability. I hope that you all understand the concept very well, and if you just want to check the other chapter, then you can just go through the channel and you can access all the chapter from chapter 1 to chapter 14. So just go, and if you have any doubt, write in your comment section. If it is possible, we will reply on it. Okay, have a nice day.